ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करें. So get a piece of paper and write your names, IDs, so that we could have us. Today is 8th of October. So let's have quiz number 1. जी नहीं अभी होगा, क्योंकि फिर बाद में जो लेट आए हैं उनको पता चलना चाहिए ना, क्यों वाई दे आर कमिंग लेट. इट इज़ फॉर द सेम रीज़न. अलाउंस बहुत दे दिया. दिस 5th वीक. आसान है, मुश्किल नहीं है वैसे. जो नहीं आए हैं उन्हीं की वजह से. चलिए ओके. So it's a closed book, closed notes, right? So say we have a table with us in which we have some resistors. We have a resistor value and we have the number of resistors. There are 10 ohms resistors. The quantity is 500. And there are 1000 ohm resistors. The quantity is 250. And there is 1 ohm and 10 ohm resistors. The quantity is and 100 ohm resistors. The quantity is 250. So my question is, if you draw a resistor at random, what would be the probability of 10 ohm resistor? If you draw a resistor at random, what will be the probability that it would be a 10 ohm resistor? Second question is, if you know that this is a 10 ohm resistor, what would be the probability if you draw second time, the resistor would be a 1 ohm resistor, provided you have in your hands a 10 ohm resistor. I repeat the question. You have a bin, distribution is as shown. If you draw a resistor at random, give me the probability that it would be a 10 ohm resistor. Right? Second, if you draw another resistor, then what would be the probability that it is a 1 ohm resistor, provided you have one 10 ohm resistor with you. टेन ओम वाला आपके हाथ में है. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नया रेजिस्टर निकलेगा वो 1 ओम का निकलेगा?
ये बड़ी सिंपल सा है, आई डोंट नो क्या है, आप खुद सोचें। पीछे का 1 ओम एंड 100 ओम। इसको चले मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देता हूँ, इस प्रॉब्लम को आप बजाय 1 की जगह 1000 कर दें, ठीक है। वैसे ये 1 ओम एंड 100 ओम्स दोनों के मिला के 250 है।
Nice last 2 minutes. Sorry? And means 1 ohm union 100 ohms. हाँ कर दिया मैंने, तो इसका सवाल का जवाब दिया था। ये चीज़ ये है ही 1000 ओम के साथ, सवाल तो 1000 ओम के साथ। सेलेक्ट कर लो, टाइम इज अप। सबसे ले लो। हाँ जी, कैसे होगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? टोटल रेजिस्टर्स आर 1000 रेजिस्टर्स। क्लासिकल डेफिनेशन सेज कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स निकालनी हो तो उस केस के अंदर आप नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट करके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ohms, sorry, 10 ohms equals to the number of 10 ohm resistors in the bin are 500, total resistors in the bin are 1000. So ये तो आ गई आपके पास 1/2 0.5 50% चांसेस है कि जब आप रजिस्टर निकालेंगे तो वो 10 ohms का होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सेकंड पार्ट में थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जी अब वो रजिस्टर आपके पास ही है 10 ohms वाला, प्रोवाइडेड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि अब मैं सेकंड रजिस्टर जो निकालता हूँ वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1000 ohms का होगा, राइट? अच्छा, पहली बात तो ये कि सिचुएशन को अगर एनालाइज करें कि तो 10 ohm का आपने निकाल लिया है, आगे आप एक और निकालने जा रहे हैं 1000 ohms का। क्या उस 10 ohm के रजिस्टर के निकालने से उस 1000 ohm के रजिस्टर पे कोई फर्क पड़ता है, या अगली जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क पड़ता है? इज इट अफेक्टिंग दैट थिंग? इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट थिंग, इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। सो इट मीन सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो ये कि आपके पास 1000 में से एक रजिस्टर आपके हाथ में है, तो अब जो अंदर बच गए हैं वो 999 बच गए, राइट? सो दैट इज द ओनली इफेक्ट विच विद दैट 10 ohm रजिस्टर विल हैव। सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी नाउ 1000 ohms के 250 रजिस्टर्स हैं और टोटल जो अंदर बच गए हैं वो 999 बच गए। सो दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000 ohm प्रोवाइडेड द 10 ohm इज इन योर हैंड, राइट? अगर मैं इसको लेके चलूँ बाय द मेथड ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो दिस इज इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ए और बी और ये कैंसिल हो जाते हैं और वही बच जाता है जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने ऑटोमेटिकली उसको अपनी अकल इस्तेमाल करके पहले ही इस तरह सॉल्व किया, तो मेथड फार्मूले में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच, जस्ट यू हैव टू यूज योर ब्रेन दैट इफ इट दिस इज द सिचुएशन, दिस शुड बी द आंसर। लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। आपके पास ये बिन था, इसमें ये भी थे और ये भी थे और एक तीसरी टाइप के भी थे, ठीक हो गया। आपने एक निकाल लिया, बाकी अंदर बच गए 999। पहले वाले केस में जब आपने रैंडमली निकाला है तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी अंदर वो आधी आधी थी, 500 वो थे और 1000 टोटल थे, तो ये तो सिंपल केस है। दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि आपने एक 10 ohm का रजिस्टर निकाल लिया है और अब आप सेकंड टाइम निकालने जा रहे हैं उसी डब्बे के अंदर, वो आपके हाथ में है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नया रजिस्टर होगा वो 1000 ohms का होगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ 10 ohm रजिस्टर इन योर हैंड। सो बिल्कुल जनरली ब्लैंक माइंड से सोचा जाए तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता कि आप सेकंड टाइम निकालने जा रहे हैं तो वहां पे कोई इफेक्ट होगा, उसका कोई ताल्लुक होगा इससे सिवाय इस चीज के कि अब उसके अंदर रजिस्टर कम है।
दैट इज द ओनली इफेक्ट, एक रजिस्टर कम है, ठीक हो गया। तो आपने उस चीज को कटर कर लिया वंस यू कंप्यूटेड इट के 250 आदि टोटल नंबर ऑफ 1000 ओम रजिस्टर्स, और जो अंदर टोटल बच गए हैं वो 999 बच गए। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000 ohm resistor provided 10 ohm resistor is in your hand, right? So that is the way to solve it out. 1000 over 10 कहाँ लिखा मैंने? ये मैंने लिखा है probability of 1000 ohm given 10 ohm is in your hand. तो इसको सॉल्व करने के लिए we need to use दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर हम इसको इस तरह लेके जाएं। अदरवाइज तो ये सिंपल एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करें आप, तो ये आप सोचें तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि 1000 ओम के रजिस्टर पे 10 ओम का कोई फर्क पड़ेगा, सिवाय इस चीज़ के कि 1 ओम का एक रजिस्टर कम हो गया उसके अंदर। तो वो वही पुराने क्लासिकल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया 250 by 990, राइट। Okay, so let's move. In fact, हमने last class में we modeled a communication system, a 48 speaker communication system, और हमने देखा था कि जी how the probabilistic models they are used or they can be used for modeling any real time system। एक example हमने की थी और हमने एक उसको लिंक किया था कि किस तरीके से ये ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि whenever we go for such like systems, we always decide to not exhaust all the resources. We try to use lesser resources so that it is optimally utilized or the utilization is maximum. It's not like this that the channels are empty or they are not being used because आपने सारी की सारी resources use कर ली हैं जो कि आपको being an engineer नहीं करनी चाहिए थी। So that was the focus. Now we will go towards some of the more classical concepts related to probability, and then we'll move forward and apply this now to a communication channel. How we will see कि किस तरीके से हम जब एक binary communication system डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो probability theory है, जिसे हम a priori probability कहते हैं और posteriori probability कहते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं by the help of conditional probabilities, Bayes theorem, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे उस मॉडलिंग के अंदर। But before that we need to see what could be the basic models, how to compute the probability by different methods. Then we'll go towards the conditional probability कि वो किस तरह से हम compute करते हैं। Then we'll go towards the total probability, then we'll go towards the independent events। इन चीज़ों को हम कवर करके we'll move towards the Bayes theorem, and then we'll apply the Bayes theorem towards this type of application, जो कि हमें फिर वहाँ से इसका एक्चुअल पता चलेगा जी कि क्या है, क्यों ये हम करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो बेसिकली दैट वुड बी द वे टू गो अबाउट इन टुडेज क्लास। सो अगर आप इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि व्हाट वी मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय एन इवेंट, देन व्हाट डू वी मीन बाय अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, what is an outcome, we did an example as well। थोड़ा सा उससे आगे लेके चलते हैं और कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में डाउट कर रही थी लास्ट क्लास में उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा और then we'll move forward। Now the one thing which is important is the elementary event। So out of the events there are some events which are called elementary events। So what are the elementary events? They are also called the atomic events, right? So in fact whenever we do an experiment, for example if we toss a die, if our experiment is we toss a die or roll a die, then we can note down the numbers. Either we will get a 1 or a 2 up to 6. So elementary events would be those events which can be at a time only one possible. Like out of all those events I can write down the numbers. In fact it could be a 1, so this is an elementary event, or it could be a 2 up to 6. So all of them one at a time is an elementary event. Different outcomes are elementary event होते हैं।
ठीक है, एंड देन वी बिल्ड अपॉन दीज कि अब पहले एलिमेंट्री इवेंट के बाद सेकंड इवेंट, सेकेंडरी इवेंट हुआ, वो क्या हुआ, टर्शियरी इवेंट क्या हुआ, वो आगे से फिर फर्दर क्लासिफिकेशन. बट एलिमेंट्री इवेंट्स आर दी इवेंट्स with one and only one element, one and only one element. So definition is an event with one and only one element. ठीक हो गया. इवेंट स्पेस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इवेंट स्पेस in fact is the set of all subsets of ओमेगा. सर ये डाई के केस में यहाँ पे पहला वो मैंने इसका रोल किया वो 1/6 आएगी. प्रोबेबिलिटी 1/6. 1/6 लगेगी. प्रोबेबिलिटी जो है, नहीं ये तो इवेंट तो 1 ही होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है. दो डिफरेंट चीज़ें. ये इवेंट की बात हो रही है. इवेंट, so event is 1 but the probability is 1/6 because these are equally likely events. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और definitions भी पहले अब इसको देख लें. Event space is set of all subsets of omega. So if we run an experiment, then collect all the events which can possibly occur, those are called the event space. If we run an experiment and collect all possible events which could possibly occur in that situation, those are called, उनको हम combine कर दें तो we call them the event space. For example, if I give you an example that say consider this course of mathematical methods and communication. So say if this is a course which is with the course code of EE 614. So if you take this course, then classify the grades in pass, fail and incomplete, right? So say अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ओके मेरा जो इसके अंदर कैपिटल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा हम क्या नाम देते हैं? सैम्पल, सॉरी सैम्पल स्पेस नाम देते हैं. तो इसमें ये तीन इवेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं पॉसिबल हैं, पास, फेल और इनकम्प्लीट. जो मेरी इवेंट स्पेस होगी आई जनरली रिप्रेजेंटेड विद दिस इटैलिक एफ. दैट कुड बी, this is one possibility that there is no event. Another possibility is pass or fail. It means these are those people who have completed the class. I can write down that this is the sub event space या sub event completed the course. जब complete करेंगे तो either उसका pass आएगा या fail grade आएगा. Then it could be, another one could be pass, another one could be pass or incomplete, another one could be only fail, another one could be fail or incomplete. So this event is all those people who are failing. This event is all those people who did not pass. I will not say that they failed, but I will say they did not pass. So this is another sub event which is possible. Or in a similar way, I can write down I as another event, and then the pass, fail or I total events. So we call this is the type of people who took the class. Okay? This is the type of event who may be withdrawal from the, or did not attend the class, या missed the classes. They were not appeared in the exams. इसको कोई हम नाम दे सकते हैं. It may not be clear कि did not appear in the exam because केस में आई आ जाएगा. Maybe there are some people जो कि they are not, their names are there in the attendance sheet but they are not there in the class, right? So maybe they did not register. These are those people. So we can describe different events within our total sample space. So we call this as the event space. ये सारे events possible हैं इस एक situation के अंदर. ठीक है? क्लास में तो सिर्फ पास फेल आई आना था. अब उसके अंदर हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि कुछ लोग हैं जो
जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कुछ लोगों ने क्लास ली, कुछ लोग जो हैं वो क्लास में पास हो गए, कुछ लोगों ने क्लास में फेल हो गए, कुछ लोग जो थे उन्होंने पास नहीं किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट इवेंट्स पॉसिबल हैं विद इन दैट कैटेगरी। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट स्पेस। सो दिस इवेंट स्पेस इज डिनोटेड बाय दिस स्क्रिप्ट एफ, और इसको हम इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहीं से खुद ही क्लियर हो रहा है, सैंपल स्पेस इज इंडिविजुअल जो आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर से हमने सब इवेंट्स निकाले हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉम्बिनेशंस बना के। सो दैट इज द इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस में जिसमें इवेंट्स होंगे, इवेंट्स उस सैंपल स्पेस के अंदर सिर्फ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स के अलावा भी इवेंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। तो जनरली हम नाम देते हैं कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हो, हमारी ओमेगा के अंदर अगर n इवेंट्स हैं, तो हमारे जो स्पेस f है जिसको हमने इवेंट स्पेस का है, उसके अंदर 2 पावर n एलिमेंट्स होते हैं। वी गो एंड कंप्यूट दिस, ठीक है। I'll just be brushing up these things. In fact, these are the things which you already know. मैं इनको इतनी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा। I'll still be touching them, but not into the very much details और proofs के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, but just I'm trying to remind you all these things ताकि एक दफ़ा आपकी चीज़ें fresh हो जाएंगे, ठीक है। I believe that you have been doing this earlier as well. So now coming on to the in fact there are 3 approaches to compute the probabilities. There are 3 ways we consider assigning the probabilities, and those are the one which we did, that is the relative frequency approach. Number 2 is classical or counting approach. मैं इस पर सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन किया था नजम नाम है आपका, नजमुल इस्लाम, कि जी ये मैं काउंटिंग क्यों कर रहा हूँ, इसमें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नज़र नहीं आ रही है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका था। तो मैं सिर्फ उस चीज़ की वजह से ये इस चीज़ पे यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि देयर आर in fact 3 ways to assign the probability. One is called the relative frequency approach, second is the classical or counting approach, and third one is the reasonable definition approach. That is how we do reasonable definition approach. So the relative frequency approach क्या है जी? Relative frequency approach relative frequency approach is कि आपके पास एक event A है and we define the probability of that event PA, right? For that purpose what we do, we repeat the experiment n times. We repeat the experiment n times and let the event happen, then count the number of times that event A occurs, right? That is, maybe that number is NA out of the total repetitions which we did, and repetitions are small n. So now probability of A is defined to be number of times A occurred divided by the n, right? And here we apply a limit that this NA tends to infinity. You have done this experiment for infinite times, right? It should be in fact not NA, it should be small n, small n. Just let me
क्योंकि आप रिपीट तो उसको कर रहे हैं. So दूसरा भी इसका ही होगा, लेकिन ये कि we do this repetitions are infinite times. So this was the approach which is for the definition of probability. Once we do the experiment infinite number of times, by infinite we means enough number of times, right? And I gave you an example as well कि if you just consider an example कि आप अगर टॉस करते हैं कॉइन, तो आप हो सकता है कि 10 दफ़ा टॉस करें तो 10 की 10 दफ़ा ही आप हेड आ जाए आपका, तो आपके केस में इसकी प्रॉबिलिटी जो है वो 100% है. बट इट्स नॉट द केस, इट शुड बी 0.5. वो 0.5 उस वक्त आएगा अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा दफ़ा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी आपका टेल भी आएगा, कभी आपका हेड भी आएगा. तो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स में आपकी प्रॉबिलिटी की वैल्यू जो है वो ठीक हो जाएगी, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग इंट्यूशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि ज़्यादा प्रॉबिलिटी इस चीज़ की है कि जो इवेंट ज़्यादा अकर करता है उसकी प्रॉबिलिटी होने की ज़्यादा होती है. और इसकी बेस पर हमने डिफाइन किया था जी कि प्रॉबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी. इवेंट स्पेस जो हमारी सैम्पल स्पेस है उसकी प्रॉबिलिटी 1 होगी. और अगर आपके पास ए और बी दो इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, by the way, just for your information, there is a concept called mutually exclusive. If you do not know about this, mutually exclusive. Then there is a concept called events called independent. Then there are events which are called equally likely. यू शुड नो कि क्या चीज़ें ये बड़ी कॉमनली या बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं वंस वी अप्लाई द प्रोबेबिलिटी इनटू इवेंट्स इन एनी रियल लाइफ सिचुएशन. सो वी ऑलवेज डू समथिंग लाइक दिस. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज if something cannot occur together, if something cannot occur together. So in case once you roll a dice, so number 1, number 2, number 3 till number 6, they cannot occur together. Either it would be a 1 or a 2 or a 3. So all of them are mutually exclusive. Similarly, once you toss a coin, either it would be a head or a tail. Head and tail both cannot occur together. So mutually exclusive if they cannot occur together. Then comes the independent. Independence is slightly different than the mutually exclusive. It means that the occurrence of one event does not affect occurrence of the second event. Right? Occurrence of one event does not affect the occurrence of second event. Like the one which we took in the quiz, that the occurrence of or the probability of or taking out a 10 ohm resistor has got no effect on to taking out of a 1000 ohm resistor. कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं कि वो जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसी कोई चीज़ होती कि जुड़े हुए थे या उनको अपने आपस में लिंक किया हुआ था तब तो वो बनता था. लेकिन once one event can occur without the dependence on the other, or its occurrence does not affect the occurrence of second event, we call it a independent event. So in case of head and tail, again they are independent events because head की occurrence का कोई effect tail की occurrence पे नहीं है, या 1, 2, 3 से लेकर 6 तक जो events हैं उनका कोई ताल्लुक जो है वो आपस में एक दूसरे पे नहीं है. तो ये ना सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बल्कि इंडिपेंडेंट भी हैं. देन कम द इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज द सेम, बोथ हैव द सेम प्रोबेबिलिटी. लाइक इन केस ऑफ हेड एंड टेल, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स इज 0.5. सो बोथ आर इक्वली लाइकली. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड and the probability of tail is same. So such like events are called equally likely events, right? So specific ये जो classical example है coin की, ये event ना सिर्फ mutually exclusive होते हैं बल्कि independent भी होते हैं और equally likely भी होते हैं. Similarly, probability of occurrence of 1 till probability of occurrence of 6 both have the same probability, 1/6. So they are equally likely events, right? Not necessarily 0.5 होगा. जब भी probabilities बराबर होंगी, they are equally likely events. So those must be there in your mind. So यही सेम कॉन्सेप्ट इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी अकर होता है या इसमें भी है कि आप जब इसको सॉल्व करते हैं, हमने कहा जी कि probability of A यूनियन B, अगर A और B जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इट मीन्स के इनका जो कॉमन स्पेस है वो 0 है, नल स्पेस है, कुछ भी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है, both cannot occur together. So we call them कि जी उस केस में हम
probability of A में ऐड कर देंगे probability of B. This we did earlier in the class. The second one is the classical approach. Classical approach is based on principle of sufficient reasoning. That it was proposed somewhere in 18th century, but this is based on principle of sufficient reasoning. और basically ये at that time there was game theory being developed, so games of chance के ऊपर it was basically developed. So अगर suppose we have capital omega defined to be something like this, there is W1, W2 and you have Wn. Then the elementary events out of this sample space could be written as omega 1, omega 2 till omega n, and they are all equally likely. ठीक है, this is the physical reasoning यही बनती है हमारी कि एक sample space के अंदर जो events हैं they are all occurrence of all the probabilities are same, सब बराबर होंगी. So this is called they are equally likely events. So अगर इस केस के अंदर हमारे पास कोई एक event A है, that event A in fact is Wi1, Wi2 goes to Wim. It means it has m elements. It has m elements. Then we define that the probability of A would be equivalent to the number of elements in A divided by total number of elements in the sample space. We define it like this. This is the classical approach or principle of sufficient reasoning. कि अगर A इसके अंदर मौजूद है तो A के जो events हैं, in other words we would call it that the number of A denotes the number of elements in the set A. So I could also write it down like this, that the probability of A is number in A divided by number in omega sample space. And this definition makes sense. Reason is that the probability of individual PWI अगर ये equally likely हो तो 1/n होती है. तो वो एक था ना, n में से एक लिया आपने तो आपने कहा जी कि ये probability है. तो अगर इसको आप एक्सटेंड करें A के अंदर अगर m है तो m/n होना चाहिए. तो ये sufficient reasoning है, ये this is a reasoning approach. देखें ना, इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल इवेंट है. अगर ये 1 से लेके से ये सिंपल एक दफ़ा डाई करने वाला क्वेश्चन होता है, 1 to 6 होते, तो इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 हर एक की. तो अगर आप 1 से 3 तक आप जमा कर लेंगे जी, 3 इसमें 1 to 3 तक आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो 3/6 होनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आधे इवेंट्स उसके अंदर चले गए आपके. राइट, सो दिस इज कॉल्ड सफिशिएंट रीजनिंग अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच. तो इसमें हम हमेशा नंबर ऑफ इवेंट्स को, और बेसिकली यही हमने अप्लाई किया था उस केस के अंदर के रजिस्टर्स जो है वो टोटल स्ट्रेंथ इतनी है आउट ऑफ टोटल, तो हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं. So this is the second definition which we do. But the important point here is, or the warning is, that in this scenario जब इसको apply करना आपने, तो you should remember that the all elementary events should be equally likely. This is only applicable अगर आपके elementary events जो हैं उनकी probability या वो events equally likely हैं. ऐसे cases होते हैं जहाँ पे elementary events equally likely नहीं होते, ठीक है, ऐसे cases बन सकते हैं. तो वहाँ पे ये approach use नहीं होगी, वहाँ पे अप्रोच यूज नहीं होगी, फिर वहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, आई विल रिपीट, दैट द एलिमेंट्री इवेंट्स शुड बी इक्वली लाइकली. यू हैव टू सी ओके. जी क्या सोचा जा सकता है, मतलब जो एलिमेंट्री जिनकी इक्वली लाइकली ना हो, फॉर एग्जांपल
आप कहते हैं जी कि मेरा जो कॉइन है ये फेयर नहीं है और इसमें जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि एक साइड पे भारी है, ठीक है। ऐसे जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ फॉर एग्जांपल 2/3 सॉरी 0.7, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 0.3, तो अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। या मैं से डाई के केस में कहता हूँ कि अब कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि जी हमेशा काना उनका ज़्यादा आता है, ठीक है। सो आई कुड से जी की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज़ नॉट 1/6, रादर इट इज़ 3/6, सो बाकियों की उस लिहाज से कम हो जाएगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी में भी 0.5/6 हो जाएगी। अल्टीमेटली आपने टोटल 1 पूरा करना है, सो दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो इन दिस केस दी इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो अब यहाँ पे भी इस सिनेरियो का आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इस केस में भी इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ना इसमें जब इक्वली लाइकली था तो क्या था, 3 थे तो 3/6 वाज द करेक्ट आंसर, बट जब ये 3/6 में एक ही आ जाएगा तो ये पहले 3 अगर आप लेंगे तो वो सिंपली 3/6 नहीं होगा बल्कि 3 + 0.5 + 0.1 होगा मे बी, सो दैट वोंट कम अप टू दिस नंबरिंग, वो नंबरिंग ठीक नहीं होगी। वो जो ऊपर नंबर आ रहा है बेसिकली वो उस इवेंट की वजह से आ रहा था, अब उस इवेंट को आपने ऊपर चेंज ही कर दिया कि 3/6 हो गई है ये, तो इट मीन्स कि दिस you cannot simply add 1/6 + 1/6 + 1/6 to get an answer of 3/6 to satisfy this approach. Now it is 3/6 plus 0.5/6 plus maybe 2/6. So now in this scenario this goes something else. It is 5/5.5/6 for 3 events only, and rest of the 3 events are 0.5/6. So this approach goes wrong. यहाँ पे फिर आप इसको सिंपल इस तरह नहीं ऐड कर सकते, then you have to do it by probability of A plus probability of B। देखें ये अप्रोच डिफरेंट है, फिर probability of C ये अलग आप ऐड कर रहे हैं, सबको अलग अलग ऐड करके आप टोटल probability निकालेंगे फॉर ऑल ऑफ दोज इवेंट्स, जो कि आपने से एक इवेंट C डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर A यूनियन B यूनियन C है, सॉरी D डिफाइन किया हुआ है, तो फिर आप उसको इस तरीके से लेंगे। सिंपली आप 3 इवेंट्स को ऐड करके ये जवाब नहीं निकालेंगे, अब ये तो जवाब कुछ और आएगा, इट वुड बी डिफरेंट, ठीक है नजरुल इस्लाम। Okay, so the third one is the reasonable definition approach. Again, वो basically is more of intuitive type of thing. Like हम कहते हैं जी कि इसी को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, although that is not that important, but basically this is called reasonable definition approach. इसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करके given conditions को देखते हुए probability लेनी पड़ती है। तो reasonable definition approach. This approach is very similar to the classical approach, but it's more general, or you have to see what are the caveats in the language which person is using or the problem is mentioning. For example, if you go for a simple experiment of tossing a coin, toss a coin, so then the sample space would be H, T, and the probability of head would be 1/2, and the probability of tail is 1/2. Why? अब इसको हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? इसको हम ये यूज़ कर रहे हैं with the reasonable approach. तो basically ये एक reasonable assumption है कि ये coin fair है और ये probability इसकी होनी चाहिए. That is why it's a reasonable definition approach, and it's similar to the classical approach. But say if I change the experiment, I say okay नहीं जी इस तरह नहीं है, बल्कि इस तरह से है कि toss a biased coin, toss a biased coin. So in case of biased coin, again my sample space is the same, and we define that the probability of head is 1/3, probability of tail is 2/3. Now why? Because again here it is sensible to assume this by given physical conditions that the probabilities will be different by the language which we used. So this is again sensible, but this approach is called reasonable definition approach, means we go by this. So it's similar to the previous one, but इसमें you have to bring in your understanding of the phenomena. इसलिए क्योंकि बायस्ड कॉइन था और हमें फिजिकली पता है कि इसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो टेल के आने के। नहीं, दो ही होती हैं। बायस्ड कॉइन ये होता है कि आप
उसकी वेट कन्फिग्रेशन ऐसे करते हैं कि जब उसको थ्रो करते हैं तो उसकी हैवी साइड या लाइट साइड हमेशा ऊपर आ जाती है बाय फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। इट्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम है, टेल की ज़्यादा हो जाती है, या किसी हेड की ज़्यादा हो जाती है, टेल की कम हो जाती है। अनफेयर है ना, कॉइन इक्वली नहीं प्लेस्ड, तो इसको आज थ्रो करेंगे तो जो उसकी लाइट सरफेस है वो ऊपर आ जाएगी। आई डोंट एग्जैक्टली नो द फिजिकल फिनोमेना कि हल्की ऊपर आएगी कि भारी ऊपर आएगी, लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ द अनफेयरनेस या बाइसिंग इट वुड बी अदर वे अराउंड। सो दिस इज कॉल्ड द रीजनेबल definition approach. Okay, so if we end this, then I go towards the conditional probability now. So if we assume that A and B are the two events in the event space. You already know what is event space. A and B are the events which belong to our event space F. Event space क्या होती है चौहान साहब? आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दी सैम्पल स्पेस, उसको आप इवेंट स्पेस कहते हैं। तो उसके अंदर भी दो इवेंट्स हैं जिनको आप ए और बी का नाम दे रहे हैं। सो अगर ये आपके दो इवेंट्स हैं, देन दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज डिनोटेड बाय ए गिवन बी। यू यूज दिस स्लैश। इट इज डिफाइंड एज you take the intersection of B with A and divide by the probability of B, and the condition is this probability of B should be greater than 0, cannot be 0. It will be undefined if the denominator goes down to 0. Okay, again we will not go into the explanations of this case कि हम proof पे नहीं जाएंगे. That is the concept which we cover in the basic probability course. But this is what we call, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है ये. So इसमें इनफैक्ट किसी एक इवेंट को रिलेट किया गया किसी और इवेंट से, ठीक है. लाइक हम ये कह सकते हैं कि जी अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन दी करंट सन विच इज आउटसाइड कि अगले 1 घंटे में बारिश होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्रोवाइडेड द वेदर इज ड्राई, देयर वुड बी सम वैल्यू. एट द मोमेंट वी आर नॉट कंसर्न कि क्या वैल्यू, बट देयर वुड बी सम वैल्यू. ऑन द अदर एंड इफ आई से नहीं जी कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वेदर क्या है, जस्ट आस्क यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, एंड इफ आई आस्क यू नहीं अच्छा ये करेंगे जी अभी घंटे पहले बारिश हुई है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन. तो आप खुद ये एक फिजिकली आपके दिमाग में एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि इन तीनों केसेस में जो चांसेस हैं वो डिफरेंट होंगे. आप खुद ही कहेंगे हाँ यार कि अभी बारिश हो रही है तो अगले घंटे बाद भी बारिश हो रही होगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं. एकदम आपसे कोई पूछे मौसम आपने बाहर नहीं देखा कि बाहर बारिश हो रही है या मौसम जो है खुश्क है, अब क्या रेन की प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे यार हो सकता है 50% चांसेस हो जाए, ठीक है. अब अगर आपको कोई बाहर मौसम दिखा देगा यार बाहर तो इतनी कड़क धूप पड़ रही है और आपसे कहेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है, तो आप कहेंगे यार तो 0 है, कोई चांसेस हो ही नहीं सकते इधर. तो अगर आप देखें कि एक इवेंट की बेस के ऊपर दूसरा इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही है. यहाँ पे ये 0 है, इधर ये 0.5 है, यहाँ पे हो सकता है 0.9 हो. तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो रेन की प्रोबेबिलिटी ही है. आप एक ही चीज़ निकाल रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा आप दो कंडीशंस के साथ निकाल रहे हैं और एक दफ़ा अकेले निकाल रहे हैं, तो दी इफेक्ट्स आर देयर. सो इसी चीज़ को कैटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हिच हैज़ गॉट इट्स ओन प्रूफ्स. वील नॉट गो टू द प्रूफ्स, बट यू शुड रिमेंबर कि दिस विल बी यूज्ड वंस वी मूव फॉरवर्ड, एंड आगे हम जाके अभी बेस थ्योरम पे जब जाएंगे तो ये वहाँ पे यूज होगा. तो कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है. बी का इफेक्ट ए पर है, बी का इफेक्ट ए पर है.
देयर इज एन इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए। बी को ए से भी रिलेट कर सकते हैं। बी को ए से रिलेट से क्या मुराद है? आप ये कह सकते हैं कि जी ये ए ये है और बी ये है, ये बी है, यानी इस बी का कुछ इफेक्ट ए पे है। अगर इसको हम वेन डायग्राम में देखें, देयर इज एन इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू। सिमिलरली बी पे ए का इफेक्ट भी होगा। आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी करके सॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस अगेन द न्यूमरेटर वुड बी सेम बट द डिनोमिनेटर वुड चेंज। सही है? So let's take some special cases of this situation, special cases for A and B. वो इसलिए बताई थी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। और वो इंट्यूटिवली भी ठीक है ना, बी को होना तो चाहिए ना। आप कहें जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इट मीन्स बी है ही नहीं, तो फिर तो इसको निकालने का फायदा ही कोई नहीं है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0 तो आप तो कह रहे हैं कि जी मैं ए पे बी का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो बी तो हो ही नहीं रहा, तो क्या देख रहे हैं आप? फिर फालतू काम कर रहे हैं ना, तो इंट्यूटिवली इज नॉट ओके। सो बी हैज टू बी सम वैल्यू। स्पेशल केसेस फॉर ए एंड बी। देखिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट द फिजिकल सेंस। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो यू विल बी स्टक, देयर इज नो वे आउट। देयर आर 1001 प्रॉब्लम्स जो कि आपको, आप अगर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी गेम्स या प्रोबेबिलिटी थ्योरी यू हैव टू यूज योर ब्रेन। सी के सिचुएशन एक नॉर्मल केस में किस तरह से रिजॉल्व होनी चाहिए, एंड देन अप्रोप्रिएट तरीके से इसको आप कोशिश करेंगे क्या एक्सप्रेशन यूज हो सकती है कि ये सवाल हल हो जाए। So there are special cases for A. The first case is A intersection B is null set. अगर ऐसा हो, that is A and B are disjoint or mutually exclusive. This is the mathematical equation for mutually exclusiveness. कि A का B पे कोई effect नहीं हो रहा। So इस केस के अंदर we can write down that the probability of A provided B would be 0. Why? है ठीक है, फिजिकली तो यही, फिजिकली ये जवाब दिया ना मैंने, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर जाके इसको सॉल्व करना चाहूँ इसकी इक्वेशन से, विच वाज A by B is A intersection B, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, किधर मल्टीप्लाई, 0 से किधर मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, अगर ये A है और ये B है तो ये तो ऑलरेडी 0 है ना, है ही नहीं कोई इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई के तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, पहले ही 0 हो गई। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके, नंबर 2 इज इफ योर B इज सबसेट ऑफ A, A के अंदर B है अगर, इफ B occurs A also occur, इसका मतलब ये बनता है कि बेसिकली ये A है उसमें ये B है। अगर ये सिचुएशन हो, एवरीथिंग इज कॉमन, A के अंदर B है, तो आई कैन राइट डाउन कि मैं इसको फिजिकली कह सकता हूँ कि अगर B अकर करेगा तो A तो अकर करेगा ही करेगा। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैज अकर्ड वुड बी 100%. Why? Because probability of A intersection B divided by probability of B से अगर लेके चलूँ तो ये intersection B is probability of B. So this would be 1. Third case, अगर A सबसेट हो B का, अब इस केस में सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट। तो अगर इसको हम लेके चलें probability of A given B, it will be probability of A intersection B divided by probability of B. So we know that this intersection would be probability of A given probability of B. So ये हमारे पास B था और इसके अंदर जो है ये
ए है। हमें बता दिया है कि बी अकर कर चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ए अकर करेगा। ठीक है, केस ऐसा है कि ए बी के अंदर है और हमें पता है कि बी इज अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अकर, सो वी गेट दिस आंसर आफ्टर सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस केस जी 100% नहीं होगा ना, क्योंकि ये आप नहीं, तो वो उसके अंदर है ना। बेसिकली आप कह रहे हैं बी अकर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नो, नॉट, ये और केस है और ये और केस है। इस केस के अंदर द प्रोबेबिलिटी इट वुड बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वंस यू आर डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी 1 से कम ही होगी, तो 1 से कम होने केस में ये आंसर जो है इट वुड बी अ ग्रेटर देन ओरिजिनली आंसर। जो अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली जाए तो उससे ये आंसर बड़ा जरूर आएगा, लेकिन ये वाला केस नहीं होगा। दे आर टू फिजिकली डिफरेंट केसेस। So this is the third case. अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, then it would be further clear. अच्छा, एक छोटी सी और जो इसमें सिंप्लीफिकेशन है, अगर हम इसको देख लें, वो ये है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में ए से दो इवेंट्स हैं, ए यूनियन सी, और उनका डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं बी के ऊपर, सो दैट वुड बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, एंड प्रोवाइडेड ए यूनियन सी आर डिसजॉइंट, इनफैक्ट डिसजॉइंट यानी खाली सेट है। Right. So in this case, we know that it would be probability of A given B plus probability of C given B. ये इसके बराबर होगा, because this definition अगर इसको हम simplify करें तो it would be A union C given B. As per the definition, it would be A union C intersection B divided by probability of B. ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को we can simplify as probability of A union B, A intersection B with union of C intersection B. ये डी मोयर थ्योरम है शायद, वट एवर दैट थ्योरम इज, सेट थ्योरी में यूज होता है। वी कैन राइट दिस एज दिस, बोथ आर सेम। वेन डायग्राम से इसको प्रूव किया जा सकता है। यू कैन गो एंड सी इन दी ओल्ड बुक्स इट इज। तो यहाँ पर ये दोनों सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट हो जाते हैं, बोथ आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब डिसजॉइंट हो तो हम दो प्रॉपर्टीज को आपस में अलग अलग जमा करके लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट डाउन लाइक probability of A intersection B plus probability of C intersection B, और ये B से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, right? So now this case can be simplified as probability of A given B as per the earlier representation. This would be probability of C given B. So that is how it is done. So simplification में we can write it down like this. ठीक है। Now let's take an example of this.
So experiment is that you roll a die. Sample space in that scenario would be then we define an event A which is composed of 1 and 2 and an event B which is composed of 2, 4 and 6. So from the classical arrangements, if I ask you okay, what will be the probability of A, तो क्या होगी? Hmm? 2 by 6 means number of A divided by number of, this is the classical approach. This states that it would be 2 by 6 or 1 by 3. In the similar way, if I ask you what is the probability of B, Chauhan साहब क्या होगी? It would be 3 by 6 or 1 by 2. ठीक है? Okay. What would be the A intersection B? Answer. A intersection B. ये A है, ये B है. तो इसमें दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो 2 है. So I can write down it would be 2. So if I ask you guys what would be the probability of A intersection B, क्या होगी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक नया सेट बन गया ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर, सो इट वुड बी 1 by 6. सही है? ओके. नाउ इफ आस्क यू कि जी ओके दिस इज दी, ये तो अभी सिंपल केस हो गया. इफ आई आस्क यू ओके जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड. यहाँ पे आपका क्या नाम था मोबाइल वाले भाई? अभी देखिए आप वाला सवाल यहाँ पे भी आ रहा है. बी अकर हो गया है, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड? सो एज पर द एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट शुड बी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ऐसे ही होना चाहिए. सो क्या लिखूं? अभी ऊपर हम कंप्यूट करके हैं 1 by 6 by 1 by 2. सो द आंसर इज 1 by 3. देखिए अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले कितनी थी? वो 1 by 3 थी, और अब बी के होने के बाद भी वो सेम ही आ रही है. ठीक है? सो दैट इज पॉसिबल. इसको अगर हम फिजिकली बयान करना चाहें या इसको वर्बली कहना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज दी, इस चीज़ को कि ए के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास 1 और 2 है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 1 और 2 given that an even number was gotten. ठीक है? B में क्या even number है ना? What is the probability of getting 1 or 2 given that an even number has been obtained? An even number has gotten. B से ये मुराद है. So that is 1 by 3. अब नेक्स्ट में अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, इसी के ऊपर कर लेते हैं. लेट्स सी कि हम कहते हैं जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. सो अगेन द एक्सप्रेशन और द मैथमेटिक्स सेज कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय दिस. और इस सिनेरियो में इट वुड बी 1 by 6 by 1 by 2 विच इज 1 by 3 है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 by 3, सो इट इज 1 by 2. So that is, if the outcome was 1 or 2, the probability that the outcome was even is 1 by 2. ठीक है? The probability of outcome being even, provided the outcome obtained was 1 or 2, is 1 by 2. Conditional probability को we can expand. और इनफैक्ट जब आप जाते हैं थोड़े एडवांस केसेस में तो इट्स नॉट सिंपली दी वन कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं. वी डू इट अ लिटिल मोर कॉन्सेप्ट एंड वी गो टुवर्ड द टोटल प्रोबेबिलिटी. सो इनफैक्ट नाउ लेट्स सी
we can have a break चलें फिर total probability पे आते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. So your question is about the MATLAB, right? So fortunately I don't have MATLAB at the moment on my laptop, but I'll just be giving you a brief account of what you have to do. So MATLAB in fact is a acronym used for Matrix Laboratory. So in fact MATLAB में आप जो चाह रहे होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि you always you'd like to use it by making use of matrices, because matrices की implementation is more efficient than normal linear programming. MATLAB की खसूसियत ये है कि MATLAB के अंदर all the or most of the functions are available. They are, you have to look for those functions which can be used. It is not a programming language, it's a simulation language. So you use it for various simulations, और आपका काम ये होता है you try to find out the appropriate functions for those simulations, and those functions are distributed in various toolboxes. There are toolboxes. So you may be able to find out a neural network toolbox. There will be a toolbox for the communication. There will be a toolbox for the digital signal processing. There will be a toolbox for the controls, right? So if you open that toolbox, you will find out a content file over there. That content file will tell you how many or various functions which are available, which have been made by various people for your assistance. You can use those functions in your programs, in your codes, right? So your aim or your work is to open the command prompt and try to look for your function. You will get a list of functions. Open those functions. There are examples associated with those functions. Their implementation strategy is already mentioned. You can use them, how to use it. So your first assignment on MATLAB is that within this week you have to install it and then take any suitable tutorial from online sources and implement it by going through various things which are mentioned there, and show the results in a Word file along with the code, and send that Word file with your name to me. Any tutorial of your choice, right? Tutorial is in which all the functions have been shown implemented. They will show you the results as well. So you just need to see whether you are producing the same results or not. So just do it. We'll further extend the things into this once we go towards the DSP side of this course. We'll see how this MATLAB phenomena is used, or how it's useful in various functions, in various understanding of the mathematical concepts. But try to go over all these things. If you feel any trouble, you can discuss with me in the next class. Right, so this is as far as the MATLAB jump start is concerned. So you just start it off, do it and give me the results. It would be counted towards the graded assignment. Right. So now coming on to the other stuff which we had to do. That is in fact now coming on to the conditional probability and the concept of total probability in this. So we will be doing the conditional probability and the total probability. इधर रख दे यार, इतना दूर ये मुझे क्या समझा मैं सुपर 6 हूँ।
further I'll say necessary. Thank you. Okay. आप में से कोई चाय या पानी पीना चाहे तो मोस्ट वेलकम. So आपका पॉइंट ये था कि ये इतना स्टफ नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए इस पे, या इधर कुछ ही ज़्यादा हो गई है. नेक्स्ट पे चले जाए, पूरा नहीं आता प्रिंट. ओके फाइन, ठीक. तो आप मुझे बता दिया करेंगे सर, इधर से नेक्स्ट पे चले जाएं. ठीक है. Okay, so now I try to use the black pen, then black pen की तरह मेरे ख्याल में print बेहतर आएगा. So okay, say we have some events which are mutually exclusive. Assume, suppose that let's take B's, B1, B2 and Bn, and mutually exclusive. Events such that once we combine them together, we get the sample space. So now in this case, if I take another event A, and define something like this, A would be A intersection that thing. So I can simplify it A intersection with right. This can be further simplified as, if I take the intersection with B1, then union A intersection with B2, and if I continue this, Bn, right. So this is very straightforward simplification. This goes into everything. A intersection with the whole thing would be, अगर मैं individually इनके साथ करूँ, again this is a simple set theory explanation. This is disjoint union. All of these are disjoint. They are disjoint unions, right? They are not. There is nothing common between this and this. So this is a disjoint union. So अगर आप मैं what I do, I take the probability on both sides. If I take, okay जी, what is the probability of A? So that would be the case. If I do the probability of the right hand side, वहाँ पे disjoint unions हैं तो उनको हम separate कर सकते हैं. A intersection with B1 plus A intersection with B2, and this way we continue till we go the probability of A intersection Bn, right. By the law of conditional probability, this thing can be simplified as, because we know that the probability of A given B is probability of A intersection B by probability of B. So probability of A intersection B would be probability of A by B into probability of B. So here I can write down that it would be probability of A given B1 into probability of B1, सही है, plus then the probability A given B2 into probability of B2, and ultimately the last one, which will be the probability of A given Bn into probability of Bn. इसको further simplify कर सकते हैं हम, that the probability of A
would be summation of probability of A given Bi into probability of Bi, where I going from 1 to n. This right hand side is called the total probability because इसके अंदर there are number of probabilities which are being added. We call it the total probability, and here we have the weighted sum of conditional probabilities. ये basically weight दे रहा है इन सबको और ये conditional probabilities है और sum भी हो रहा है. So we call this weighted sum of conditional probabilities on the right hand side. सही है. अच्छा, अब इसको फिजिकली भी अगर समझा जाए तो चलें, ये तो अपने मैथमेटिक्स में बात कर ली ना कि जी हमने कहा कि वी स्टार्टेड ऑफ ओके जी दिस इज समथिंग वी हैव दी ओमेगा. ओमेगा के अंदर बीज हैं बहुत सारे और हम एक इंटरसेक्शन ओमेगा से लेते हैं, राइट, एंड देन डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो अब इसको अगर मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल इवेंट, सो लेट्स टेक एन इवेंट ऑफ चले पहले आपसे पूछता हूँ एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर यू हैव समथिंग लाइक दिस दैट देयर इज समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन समथिंग एल्स. एक बड़ी चीज़ के अंदर एक और चीज़ है जिसको आप ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको आप निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट विड बी इट्स प्रोबेबिलिटी देन आउट ऑफ एन एंटायर थिंग समथिंग इज इनसाइड. डबल ई स्टूडेंट्स मुझे इस तरह बताएं ना कि एक सैम्पल स्पेस लें और उसके अंदर बताएं जी कि ये इसके इंडिविजुअल इवेंट्स हैं और हर इवेंट में एक इवेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है. इसका तो ये मतलब बन रहा है ना कि देखें ना ये बीज जो हैं बेसिकली ये ओमेगा को बना रहे हैं और इन बीज के अंदर अगर मैं इधर आऊँ तो बीज के अंदर ए थोड़ा थोड़ा मौजूद है, हर बी के अंदर ए है. We have B's which are constituting the sample space, and within B's we have A availability. A is available in each B, and then we are computing the probability of A now. You can take any example, but just it should cover these things. अच्छा, तो क्या करूँ मैं इसको सैंपल में कहूँ जी सैंपल स्पेस क्या होगी. दिस इज ओमेगा, तो इसमें ओमेगा में क्या होगा आपके केस में. Let me just put charger to my just hold it. Let's assume come here. Any example in your mind? रियल लाइफ में सोचें यार, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी. चलें मैं आपको हिंट देता हूँ. कोई फ्रूट सोचें ऐसा. हाँ, मेरे दिमाग में एक फ्रूट की एग्जांपल आई. तरबूज खाया आपने? आजकल तो नहीं होता लेकिन खाया तो है ना, कभी कभी तो खाए ही हो. So if I just give you an example of say rather I take the color green. Okay, so we have
राउंड वन, ठीक है। सो दिस इज, तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटरमेलन, यस। सो वी हैव अ वाटरमेलन, राइट। सो वाटरमेलन में आपको व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक नंबर ऑफ पीसेस। जब उसको काटते हैं, क्रॉस इट फ्रॉम द सेंटर, देन यू मेक पीसेस। ओके जी, आई मेक पीसेस। से फॉर एग्जाम्पल दीज मैनी, इसको हम उर्दू में काश कहते हैं, ठीक है। 1 piece each maybe, so you'll have all these things. So all of these things would be if you are lucky enough, so they would be red. The watermelon would be red. अगर आप नेक आदमी हैं इमरान की तरह, तो आपका रेड निकल आएगा, और अगर अंसर की तरह है तो फिर हो सकता है आपका वाइट निकला है। दोनों वाइट निकले थे, तो आप साथ होंगे ना। चेक करके देते हैं, बाज़ का जो पैसे बचाना चाह रहे होते हैं वो चेक के बगैर भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के पैसों में फ़र्क होता है, इज़न्ट इट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है, व्हाट इज़ दैट? बीज होते हैं, बिल्कुल जी। तो you'll फाइंड आउट कि जी बीज होंगे बीच में। There would be seeds all around in each and every piece which you would cut. ऐसा तो नहीं कि किसी में नहीं हो, you will have in everyone. Say for example कि वो जो बीज है, मैं उसको थोड़ा सा कहता हूँ कि जी ये for example बीज वाला पोर्शन पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, something like this, ठीक है। So now let's start